गर्मी और बारिश की चिपचिप में तो आएगा पसीना। भाई गर्मी और बारिश की चिपचिप में तो आएगा पसीना। नहीं लगाओगे परफ्यूम तो बदबू से मेरे दोस्त भाग जाएगी हसीना। मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस. वेल हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द इंडियन साइंटिस्ट। वेल आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में जो परफ्यूम्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो लिस्ट में आपसे शेयर करने वाला हूँ, काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद मैंने बनाई है। मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लगा एंड उसका रीज़न ये है बिकॉज ऑल दीज परफ्यूम्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे I have mentioned after extensive testing under different parameters, different settings, different occasions, so that I am able to recommend something which is well researched, well tested, and tried. So, guys, this is the ultimate list of perfumes which are well suited for both summers and monsoons. So, I wanted to make sure कि मैं ये list ऐसे बनाऊं कि हर प्राइस बकेट को मैं केटर कर पा रहा हूं, चाहे अब ये परफ्यूम्स आप खुद के लिए देख रहे हैं, अपने किसी लव्ड वन के लिए, या आप एक सिर्फ विश लिस्ट बना रहे हैं। So the budget categories we'll cover today are 1000, 2000, 3000 and 5000. So budget friendly option से लेकर प्रीमियम कैटेगरी तक this list has got you covered. और मैंने ये लिस्ट डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को ध्यान रखते हुए बनाई है। सो अब आप एक सेंट ढूंढ रहे हैं जो कि आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में यूज करना चाहते हैं, एक सिग्नेचर सेंट ढूंढ रहे हैं, एक पार्टी ओकेजन सेंट ढूंढ रहे हैं, डेट नाइट सेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर आप एक सेंट ढूंढ रहे हैं जो आप अपने समर वेकेशंस भी यूज करना चाहते हो। वेल दिस लिस्ट कवर्स एवरी मूड एंड एवरी मूड। I've also tried to cover brands from India, Middle East, and some designer brands which are slightly under affordable category. So this is not just a list, ये आपका summer and monsoon perfume buying guide है। So bookmark this, share this, and refer to this list जब भी आपको ये perfumes खरीदने का मन करे। और हाँ, एक छोटा सा surprise भी है। I'll be announcing a giveaway later in the video, so make sure that you watch this video till the end because I want to give something back to this amazing fragrance loving community. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, let's dive into the list with the Indian Scientist. So the first budget category that we'll cover is under 1000. The first perfume in this list is Pour Fatan by Rasasi. Well, मेरे हिसाब से ये एक underrated gem है. This is classy and sophisticated. और ये Terre de Hermes का एक greener version है. Well, scent profile की बात करें तो ये थोड़ा सा ग्रीन अर्दी वुडी है। बारिश के बाद वो एक गीली मिट्टी की जो खुशबू आती है ना, भीनी भीनी सी, इसमें से वो आती है। इसके नोट्स की बात करें तो इसमें आपको टॉप में मिलेगा ग्रेपफ्रूट, बर्गमॉन्ट और पिंक पेपर। मिडिल में आएगा वेटिवर, सीडर, पचूली और लिली ऑफ द वैली। बेस नोट्स में मिलेगा ओकमॉस, बेंजोइन और एम्बर। अब जहां तक प्राइस की बात आती है, दिस वन इज अ 50 ml बॉटल और ये आपको कॉस्ट करेगा लगभग 990-998 रुपए के आसपास। तो इन माई ओपिनियन आई थिंक ये परफ्यूम परफेक्ट है एक फॉर्मल सेटिंग के लिए, विच मीन्स कि आप अपने ऑफिस में, अपने इवेंट्स पे आप इसको इजीली लगा सकते हो। 7 से 8 स्प्रे आपको 2 से 3 घंटे का अच्छा प्रोजेक्शन देंगे और उसके बाद लगभग 7 घंटा ऑन स्किन ये आपको लास्ट करेगा। द नेक्स्ट परफ्यूम ऑन दिस लिस्ट इज बाय एन इंडियन ब्रांड कॉल्ड बेला वीटा एंड दिस इज वाइट वुड। वेल ये इस लिस्ट का सबसे अफोर्डेबल परफ्यूम है, बट बिफोर आई डाइव इनटू द प्राइस I want to tell you about the scent profile. If we look at the perfume, ये काफ़ी फ्लोरल और फ्रूटी नोट से शुरू होता है और उसके बाद जैसे जैसे ये सेटल होता है एक काफ़ी वुडी और काफ़ी मस्की सेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इवन तो इसका नाम है वाइट ऊद, बट इसमें ऊद का टच काफ़ी लाइट है, विच मीन्स अगर आपने टिपिकली कोई एक ऊद फ्रेग्रेंस टेस्ट किया है या स्मेल किया है, ऊद कैन बी वेरी एनिमलिक, इट कैन बी वेरी स्कैंकी, बार्नयार्डी स्मेल नहीं है, काफ़ी लाइट है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जब आप इसको स्प्रे करोगे तो स्टार्टिंग के 20 या 30 सेकेंड आपको थोड़ा सिंथेटिक स्मेल आ सकता है, बट लेट इट सेटल डाउन एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग दोज फ्लोरल नोट्स, दोज फ्रूटी नोट्स विच स्मेल वेरी वेरी गुड। ये एक यूनिसेक्स सेंट प्रोफाइल है एंड व्हाइल आई एम रिकमेंडिंग दिस ड्यूरिंग समर्स एंड मॉनसून्स, आई थिंक दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेदर्स, ऑल सीजन्स। अब बात करते हैं इसके नोट्स की। सो इसके टॉप में आपको मिलेगा आर्टिमिजिया, लेमन एंड ऑरेंज। मिड में आपको मिलेगा फ्रीजिया, ब्लैक करंट और पचूली। बेस में आपको देखने को मिलेगा टोबैको, एम्बर और मस्क और वुड। ये आपको कॉस्ट करेगा लगभग 550 रुपए फॉर 100 ml का बॉटल और ये इसके 4 से 5 स्प्रे आपको कम से कम 6 घंटे का लॉन्जिविटी देंगे, विच आई थिंक फॉर द प्राइस इज वेरी वेरी गुड। वेल द थर्ड परफ्यूम ऑन दिस लिस्ट अगेन बिलोंग्स टू एन इंडियन ब्रांड एंड मैंने ये ब्रांड अभी हाल ही में डिस्कवर किया है। दिस इज कॉल्ड मेन वर्क्स। मैंने इनके
करीब 3 से 4 परफ्यूम मंगाए, बट जो मैं परफ्यूम आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, इट्स कॉल्ड माई सेल्फ. दिस इज देयर टेक ऑन व्हाई आई सेल्स माई सेल्फ. अब आते हैं इसके नोट्स पे. इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा बर्गामॉन्ट, मिडिल में आपको मिलेगा ट्यूनेशियन ऑरेंज ब्लॉसम, बेस में एम्ब्रोक्सिफिक्स, पचूली और मस्क. ये परफ्यूम काफी सिट्रसी, फ्लोरल और मस्की है, विच आई थिंक इज एन एवरग्रीन कॉम्बिनेशन. Does it smell exactly like YSL myself? No, but I think it's a great scent in itself. इसका 50 ml का बॉटल कॉस्ट करेगा आपको 999 एंड परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है. लगभग 6 घंटे के आसपास आपको इसका लॉन्जेविटी मिलेगा, which I think is pretty good for the price. So in my opinion, this is well suited for day and night and can be worn almost everywhere. अब आते हैं चौथे परफ्यूम पे इस बजट कैटेगरी में. ये भी एक इंडियन ब्रांड ही है. दिस ब्रांड इज कॉल्ड ल्यूमेर और ये उनका है फ्रेश ऊद O1. ये मेरा फर्स्ट टाइम experience of buying this brand and I must say I'm fairly impressed. Honestly, I kind of like the bottle and I must share something with you. Look at that atomizer. Ooh, it is very impressive. अब जहाँ तक इसके नोट्स के बारे में बात आती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसमें है सिट्रस, टोबैको एंड पचूली. What I picked up from its scent profile is there is zestiness of citruses, there is some sweetness of florals and there is muskiness of white wood. I know मैंने आपको बोला था कि ये वाली कैटेगरी में हम 1000 और उसके नीचे के परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे. ये 1000 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है. ये 1055 का आता है फॉर अ 50 ml बॉटल. बट व्हाट इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट अबाउट दिस परफ्यूम इज डिस्पाइट बीइंग अ फ्रेशी, इट लास्ट गुड अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब मेरा स्किन पे लगभग 7 घंटे के आसपास मुझे ये फील हुआ. ऑलमोस्ट ऑल परफ्यूम्स आर ग्रेट स्किन सेंस, बट आई फील ये काफी अच्छा हेयर सेंट भी है, विच मीन्स कि अगर आप इसको अपने ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये आपके बालों को भी एकदम महका देगा. आवर हेयर रिटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रेग्रेंस और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्मेल. सो आई थिंक दिस इज परफेक्ट अगर आप अपने बालों में भी लगाना चाहें इसको. एंड नाउ द लास्ट परफ्यूम इन दिस बजट कैटेगरी इज अनदर इंडियन ब्रांड कॉल्ड अबाबल और ये है उनका इल्यूजन. ये अबाबल का टेक है ऑन लुई विटॉन्स इमेजिनेशन. अबाबल के परफ्यूम्स ट्राई करने के लिए मैंने उनका रेवोल्यूशन कलेक्शन ऑर्डर करा था एंड आउट ऑफ दैट दिस इज द वन दैट आई लाइक द मोस्ट. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लुई विटॉन्स इमेजिनेशन. आई हैव टेस्टेड देम साइड बाय साइड ऑन अ पेपर स्ट्रिप एंड दे स्मेल एग्जैक्टली द सेम. अब क्विकली आते हैं इसके नोट्स के ऊपर. सबसे पहले स्प्रे करते ही आपको बहुत ही प्रोमिनेंट लेमन नोट्स मिलेंगे. As it settles, you will smell a little bit of tea and musk. इसका 50 ml का बॉटल आपको जस्ट अंडर 1000 रुपीज का कॉस्ट करेगा. इसके 6 से 8 स्प्रे आपको कम से कम 4 से 5 घंटे की लास्टिंग देंगे, which isn't much, but for the price, I think it's pretty decent. Also, because if you compare, the scent profile is so close to Louis Vuitton's Imagination, but Louis Vuitton के Imagination का कॉस्ट है लगभग 30,000 रुपए. So I think for that price and for that comparison, ये काफी अच्छा है. And since I have a travel size bottle, I carry it in my bag. And I top it off whenever I need it. Okay, let's dive into the second budget category, which is under 2000. इस कैटेगरी में हम कवर करेंगे 5 परफ्यूम्स which are well suited for almost all occasions and I think they're all bangers. पहला परफ्यूम जो इस लिस्ट में है वो है अहमद अल मगरिबी की ब्रांड से and this is one of my favorites. It's काफ. ये ऐसा परफ्यूम है जो हर मूड, हर सीजन, हर ओकेजन के लिए फिट बैठता है. एंड नॉट जस्ट दैट, ये यूनिसेक्स भी है. ये एक फ्रूटी, फ्लोरल, मस्की, एक्वाटिक, पाउडरी सेंट प्रोफाइल के साथ आता है. इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा लैवेंडर, वाटरमेलन, सिसिलियन ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स. मिडिल में देखने को मिलेगा लिली ऑफ द वैली, लोटस एंड जैस्मिन. बेस में सैंडलवुड, व्हाइट मस्क एंड अब्रॉक्सल. जब मैंने इसके नोट्स देखे थे तो मुझे लगा था कि ये काफी फ्रूटी, काफी फ्लोरल और काफी स्वीट होगा मेरी लाइकिंग के हिसाब से. बट व्हेन आई स्मेल्ड इट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि इसमें फ्रूटी और मस्की नोट्स का काफी अच्छा बैलेंस है. दिस वन विल कॉस्ट यू अबाउट $1800 फॉर 100 ml बॉटल एंड दिस इज एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, स्पेशली ऑन दोज डेज जब काफी हाई हीट हो और बाकी सारे परफ्यूम्स टिपिकली मेल्ट अवे कर जाते हैं या फेड अवे हो जाते हैं. दिस विल टेयर थ्रू द हीट एंड विल लास्ट यू द एंटायर डे. In my opinion, this is a summer beast mode perfume. The next perfume on this list is something that I've talked about a lot in my previous videos. It is something that I really enjoy wearing. मैं बात कर रहा हूँ मेसन अल्हम्ब्रा के जॉन लो इमॉर्टल की. ये लुई विटॉन के लिमेंसिटी को क्लोन करता है. In my opinion, as I've said it before, ये काफी ज्यादा क्लोज क्लोन है उसका. This one is fresh, spicy, gingery, aquatic, citrusy, just perfect for a hot summer day.
Imagine yourself sipping your favorite drink on a beach and just enjoying it. This one will make you feel like that. इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा जिंजर, ग्रेपफ्रूट, बर्गामॉन्ट. मिडिल में आपको रोजमेरी, वाटर नोट्स, सेज और जेरेनियम का कॉम्बिनेशन मिलेगा. और बेस में आपको मिलेगा अब्रॉक्सन, एम्बर और लैबडानम का. दिस वन कॉस्ट अबाउट $1800 फॉर 100 ml बॉटल. It's a casual wear for well suited for day and night, and it will last you for about 6 to 7 hours, which is a very good longevity according to me. Well, next perfume on this list is again by a Middle Eastern brand called Ahmad Al Maghribi. पहले हमने उसका काफ देखा था, अब हम बात कर रहे हैं इसके ब्लू की. ये एक फ्रेश, aquatic और ब्रीजी सेंट प्रोफाइल के साथ आता है. तो अगर आपको ऐसी एक सेंट प्रोफाइल पसंद है या आप ऐसी एक सेंट प्रोफाइल चाहते हैं, you should definitely check this one out. Before we get into the notes, I wanted to check something. Look at that. I mean, the best part about Ahmad Al Maghribi as a brand is इनके atomizers are absolute fire. Well, blue is said to be a very close clone of Bleu de Chanel, or it follows the same DNA but with a Middle Eastern twist. Both this one and Bleu de Chanel have sandalwood in the base, but ब्लू में आपको सैंडलवुड का वो थोड़ा प्रोमिनेंट नोट देखने को मिलेगा. इसके ओवरऑल नोट्स में आपको मिलेगा ग्रेप फ्रूट, लेमन, मिंट एंड पिंक पेपर. मिडिल में जैस्मिन, जिंजर, नटमेग. बेस में सैंडलवुड, पचूली, सीडावुड, वाइट मस्क, लैबडानम, वेडवर और इंसेंस. दैट्स वन हेफ्टी लिस्ट ऑफ नोट्स, स्पेशली जब आज के टाइम पे हमको काफ़ी सारे ब्रांड्स बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं. आई थिंक अहमद ने काफ़ी अच्छा काम किया है ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल द नोट्स दैट यू विल फाइंड इन दिस परफ्यूम. बात करें इसके प्राइस की, सो इसका 100 ml का बॉटल विल कॉस्ट यू अबाउट $1900. विद 4 to 5 sprays, I think you're set for throughout the day. Now, because इसमें citrus का इतना prominent note है, which makes it a very fresh scent, it is very well suited for your gym workout sessions or even after that. Okay, अब तक मैंने आपको जो perfumes बताए हैं, they have been all recent launches, right? But the one that I'm going to talk about now was launched in 2006, and I'm talking about Nautica Voyage. Despite of being launched 20 years ago, Nautica Voyage continues to be a hot favorite for a lot of people out there. And the reason for that is because this scent profile, this aquatic profile, is so easy and so familiar to wear. Well, spraying it will give you a feeling of that fresh and salty air, which is very refreshing in this weather. Now, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी typical और काफ़ी familiar scent profile है, that also means काफ़ी लोगों को ये काफ़ी boring भी लग सकता है. But in my opinion, that also makes it a perfect no-brainer scent for everyday use. This is a day scent, which means you can wear it to your school, college, brunches, day events. What I won't recommend is wearing it on days when you are going to be extremely busy, because longevity is a problem on this one. It won't last beyond 3 to 4 hours, which means you need to top it off again. Well, ये काफ़ी affordable designer scent है. इसका cost है लगभग $1800 for a 100 ml bottle. Now let's quickly look at the notes. इसके top notes में है green leaves and apple, middle में lotus and mimosa, base notes are musk, cedar, oak moss and amber. अब आते हैं last perfume इस price bucket में, और this one is it's essential by Rasasi. Well, ये 2023 में launch हुआ था, but according to me ये एक underdog है Rasasi के lineup से. ये एक काफ़ी ज़बरदस्त सेंट प्रोफाइल है, स्पेशली बिकॉज ये क्लोन करता है YSL के लाओम अल्टीम को, विच हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. नाउ आई स्पेशली लाइक परफ्यूम्स जो क्लोन है उन परफ्यूम्स के दैट हैव बीन डिसकंटिन्यूड, बिकॉज such clones give you an opportunity to smell the scent profile even though they're in a different bottle by a different brand. अब बात करते हैं इसके नोट्स की. इसके नोट्स काफी सिंपल, काफी अनकॉम्प्लिकेटेड है. इट स्टार्ट्स विद बोल्ड citrus and fruits like orange, bergamot and pear. In the middle you will find rich florals like geranium, lavender, magnolia and jasmine. And in the base, aromatic woody notes like cedar, tobacco, vanilla and cinnamon. ये लास्ट करेगा आपको करीब 5 से 6 घंटा, बट आपको थोड़ा सा जेनरसली इसको स्प्रे करना पड़ेगा, विच मीन्स मिनिमम ऑफ 8 स्प्रेज इज व्हाट यू शुड डू. इसका कॉस्ट है लगभग $1250 फॉर अ 100 ml बॉटल. अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज अ मस्ट हैव इन योर कलेक्शन फॉर समर्स. मेरे कलेक्शन में मेरे पास लगभग 200 परफ्यूम्स हैं, बट आई कीप गोइंग बैक टू दिस वन बिकॉज ये इतना फैंटास्टिक स्मेल करता है. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्राइस बकेट पे, जो कि है अंडर 3000. वेल, इस प्राइस कैटेगरी में आपको डिजाइनर तो नहीं बट मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली दोज विच हैव बीन रिसेंटली लॉन्च्ड. द फर्स्ट वन इन दिस लिस्ट इज रेयर रीफ बाय आफ्नान, एंड ये मेरा न्यू समर फेवरेट भी है. रेयर रीफ आफ्नान की एक ओरिजिनल क्रिएशन है. इनफैक्ट दिस हैज बीन परफ्यूम्ड बाय ल्यूकस यूजैक. ही इज द सेम पर्सन हु इज आल्सो क्रिएटेड
Reflection Man by Amouage. Now, before we dive into the price, the scent profile, and other things, let's just admire the bottle for a second. I think it looks absolutely spectacular. That whole design here on the bottle looks absolutely beautiful to me. Right from the first spray on this one, you get that massive hit of citrus and mint. Well, honestly, ये इतना fresh, इतना vibrant है. I genuinely feel कि Afnan has created a true masterpiece with this one. I would go on to say that ये 2025 का best summer fragrance launch है अब तक का. ये सिर्फ मेरा opinion नहीं है, मैंने इसे काफ़ी सारे अपने friends को smell करवाया, मेरी wife ने इसे smell किया, and all of them absolutely loved it. इनफैक्ट मेरी वाइफ को ये इतना पसंद है कि उसने अपने बाकी परफ्यूम्स को छोड़ के सिर्फ इसको लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि इसका सेंट प्रोफाइल इतना अमेजिंग है. इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा ब्लैक करंट, मिंट, सिट्रॉन, ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट एंड कोरिएंडर. मिडिल में एप्रिकॉट, वायलेट लीफ, बेसिल एंड रोज. और बेस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा फिग, एम्बरवुड, एम्बरेट एंड डेट्स. Now talking about longevity, this one will easily last you 6+ hours. आज भी मैंने इसको लगाया था, मैं इसको ऑफिस लगा के गया था. Believe me, ये I said 6+ hours, but I could feel it even after 8 hours. ये लॉन्च हुआ है लगभग 2500 की प्राइस रेंज पे. काफ़ी जगह आउट ऑफ स्टॉक है करंटली, एंड आई हैव अ फीलिंग दे विल स्लाइटली हाइक अप द प्राइस. Even then, I feel it is absolutely worth it. This is largely a day scent, and you can wear it on days when it is extremely hot. But believe me, the moment you'll wear it, you'll feel minty fresh. Okay, अब आते हैं नेक्स्ट परफ्यूम पे इस प्राइस कैटेगरी में. ये है अरमास से Odyssey Limoni. Well, it is said to be a clone of Afternoon Swim by Louis Vuitton. I have not personally smelled Afternoon Swim, so I can't verify to that fact. But just look at the bottle once. It screams summer scent. Well, honestly, the atomizer is trash, but that scent profile is as bright as this bottle. This is a fairly new launch by Armaf. This was launched in 2024 and it is a unisex perfume. इसको smell करते ही आपको एक lemon soda या lemon iced tea जैसी feeling आ सकती है क्योंकि honestly इसके base notes में tea का note भी है. Talking about that, let's quickly look at the notes. The opening is full of citruses with lemon, sweet orange, mandarin and bergamot. Middle notes में marine notes, orange blossom and ginger है. और बेस नोट्स में टी, मस्क और एम्बर. Now since this is so heavy on citruses, I feel you should avoid it wearing during the nights, but it's a perfect scent for day. This one will cost you just a notch above 2000 rupees for a 100 ml bottle. Easily आपको 6 घंटे के आसपास का longevity देगा, which is not a lot but not bad at all. Now the next one on this list is Nitro Red by Dumont. Now because it is so sweet and fruity, I don't gravitate towards it so much, but if you are someone who's in school or college, I think you will definitely like this one. I'm sure many of you would have heard about this perfume already. ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, एक हाइप मॉन्स्टर है, इतना कि एक दूसरे परफ्यूम ब्रांड ने इसका क्लोन किया है, जबकि ये मिक्स है between two perfumes. Yes, this is a mix between Baccarat Rouge 540 and Invictus. I think this is very well suited on days, especially when it is super hot outside, but also on evenings if you're on a date or going to a party. इसके top notes में आपको मिलेगा apple, lavender and bergamot, middle में watermelon and cedar, और base notes में amber, sandalwood and patchouli. This one will cost you about $2,500 for a 100 ml bottle. Projection, fantastic. Longevity, fantastic. No questions about it. It will easily last 10+ hours on your skin. Now next we'll talk about two perfumes simultaneously. Why? Because I could not decide or get myself to pick one and not pick the other one. They're from the same house, same lineup. One is a recent launch and the other is a hype monster. I'm talking about Turathi Blue and I'm sure you would have guessed it, Turathi Electric. Well, Turathi Blue मेरा first perfume था from the house of Afnan, and since this perfume they've launched a ton of new perfumes, but believe me, till this day this one continues to impress me. Let's quickly look at the notes. इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेंगे बहुत सारे सिट्रसेस, मिडिल में एम्बर एंड वुडी नोट्स, और बेस में मस्क, स्पाइसेस एंड पचूली. दिस वन easily lasts for about 7 to 8 hours and will cost you roughly about $2,800. Now coming to Turathi Electric, it is the same bottle design as Turathi Blue, but Afnan has changed something in his bottle. Well, a lot of people complained about Turathi Blue being not very stable. You see this? Well, they have changed it on this bottle. They've made it more stable, so that's a good thing. Now coming to how the bottle looks,
the feel of this bottle, that blue purple tint gradient looks absolutely spectacular and beautiful. इसके notes में है pear, mandarin orange, pink, grapefruit and bergamot. Middle notes are orange blossom, cedar wood, apple. Base notes are musk, vanilla and amber. Well, ये आपको 6 से 7 घंटे की longevity देगा with about 7 to 8 space, which is decent, not bad at all. If you compare it with Turathi Blue, it is slightly lesser. Also because it has ambroxan, Turathi Blue has ambroxan, so which pushes the perfume a bit more. But because it's much more fresher as a scent profile, I think it has a very decent projection and longevity. While both of them open up with a burst of citruses, Turathi Blue settles into a more musky and woody notes, whereas Electric has more floral, fruity notes with a hint of vanilla in it. I think both of them can be worn anywhere: school, college, work, parties, daytime, nighttime. I think you can wear it at any time of the day. And now we'll talk about the last perfume in this price category. This is Ether Extract by French Avenue. I want to share something on this one. Well, जब ये मेरे पास आया था and I sprayed it, and I think a lot of people have talked about it in their videos, I didn't feel anything. मतलब मुझे हार्डली कुछ स्मेल आया. मुझे लगा कि यार ये क्या बेकार का परफ्यूम लॉन्च किया है. बट आई देन लेट इट मैसरेट अ बिट. काफ़ी दिन रखा रहा. And then when I sprayed again, I was fairly surprised. Well, this one is a clone, and a bloody good clone of Perfumes Under Greenly. Now, right before we dive into those notes, let's look at that atomizer. That pressurized atomizer is just straight up fire. इसके टॉप में आपको मिलेगा ग्रीन एप्पल, bergamot, mandarin orange, मिडिल में सीडार, पेटिग्रीन, कैश्मीरन एंड वायलेट, और बेस नोट्स में मस्क, ओक मॉस एंड एम्बरवुड. ये आपको कॉस्ट करेगा लगभग 2700. इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी, दिस वन विल लास्ट अबाउट 6 hours, slightly more. And in terms of projection, a decent projection for about 1 to 2 hours. Now with this, we've come to the end of price bucket under 3000. Now the next list is price bucket under 5000. But before we do that, I am also very excited to announce a first giveaway on this channel. Now क्योंकि हम बात कर रहे हैं समर और मॉनसून फ्रेग्रेंसेस की, तो मैंने सोचा कि गिव अवे भी उसी कैटेगरी में होना चाहिए. वेल, ये काफ़ी हाइप्ड अप परफ्यूम्स हैं, रिसेंटली लॉन्च्ड हैं. आई एम श्योर काफ़ी लोगों की विश लिस्ट में भी होंगे. सो लेट मी क्विकली शेयर ये कौन से परफ्यूम्स हैं. वेल, द फर्स्ट वन इज ऑडिसी लेमोनी बाय अरमाफ, एंड द सेकंड वन is one of my recent favorites is Turathi Electric by Afnan. Now ये दोनों परफ्यूम मैं किसी एक लकी सब्सक्राइबर को दूंगा. Rules of engagement I will talk about later in the video. Okay, now with that, let's quickly talk about my recommendations for summer and monsoon fragrances under 5000 rupees. The first perfume in this list is by the house of Armaf, और ये Club de Nuit line से है. This is Club de Nuit Intense Man Limited Edition. बात करें इसके सेंट प्रोफाइल की, ये एक वुडी, स्पाइसी और मैस्कुलिन सेंट प्रोफाइल के साथ आता है. बॉटलिंग, पैकेजिंग काफ़ी सेक्सी है. आई थिंक इफ यू आर लुकिंग टू गिफ्ट इट टू समवन, इट्स अ परफेक्ट बॉटल टू गिफ्ट. आई एम अ बिग फैन ऑफ क्लब डी न्यूईज इंटेंस मैन लाइनअप. आई थिंक इस लाइनअप में काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है टू क्लोन क्रीड एवेंटिस. हैविंग सेड दैट, दिस वन टर्न्ड आउट टू बी माई एब्सोल्यूट फेवरेट फ्रॉम द लाइन, एंड द रीज़न फॉर इट इज़ बिकॉज इसमें वो इंटेंस मैन प्योर परफॉर्म या फिर इंटेंस मैन ओरिजिनल का जो हार्शनेस है बिगिनिंग में, वो नहीं है. दिस इज वेरी वेल राउंडेड, दिस इज सॉफ्टर ऑन द एजेस, दिस इज अ मच मोर क्लीनर वर्जन ऑफ क्रीड एवेंटिस. पहले अब बात करते हैं इसके नोट्स की, एंड बिलीव मी, इसमें काफ़ी सारे नोट्स हैं. सो लेट्स क्विकली लुक एट देम. इसमें टॉप में आपको मिलेगा लेमन, पाइनएप्पल, लाइम, ब्लैक पेपर, बर्गमॉट एंड पिंक पेपर. वेल, मिडिल नोट्स में आपको देखने को मिलेगा जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली, रोज एंड फ्रीजिया, और बेस नोट्स में अम्ब्रॉक्सन, व्हाइट मस्क, एम्बरग्रिस, सीडार, लेदर एंड पचूली. आई नो दिस लिस्ट इज for summer and monsoon fragrances, but this one here is one perfume which is well suited for all throughout the year. This is a beast mode fragrance, well suited for day and night parties. ये minimum 8+ hours last करेगा, but it costs about $4,500. Now the next one on this list is again by the house of Armaf and from their Club de Nuit line. This is Precious One. हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा expensive cost करता है because for a 55 ml bottle you'll have to shell out about $4,000. But, and it's a big but, it smells fantastic. जितनी बार भी मैंने इसको लगाया है, and believe me, I am not joking, मुझे हर बार एटलीस्ट 3 कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अभी अपना परफ्यूम कलेक्शन शुरू कर रहे हैं तो कौन सा परफ्यूम खरीदना चाहिए.
या कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि एक परफ्यूम आप बताओ जो कि पूरे साल सब ओकेजन्स के लिए वेल सूटेड हो, एंड आई ऑलवेज ऑलवेज रिकमेंड प्रेशियस वन। इसके नोट्स में है पाइनएप्पल, लेमन, बर्गमॉन्ट, कैरमल, पेयर, पिंक पेपर एंड ब्लैक पेपर। मिडिल नोट्स में ओकमॉस, व्हाइटवुड, जैस्मिन, अनीस, लिली ऑफ द वैली। और बेस नोट्स में आपको मिलेगा अम्ब्रॉक्सन, एम्बर, पचोली, व्हाइट मस्क, वनीला, लेदर एंड सीडर। Now, since I've already covered 2 Middle Eastern perfumes in this price category, the next 3 are going to be designer perfumes. I'm deliberately moving away from Middle Eastern perfumes because I want this list to be a bit more versatile. Alright, so the next perfume on this list is L'Odyssée Pour Homme by Issey Miyake. अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता इसे मियाके के बारे में, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये एक जापानीज ब्रांड है, काफी आइकॉनिक ब्रांड है और मुझे इनके काफी सारे परफ्यूम्स पसंद है। मैंने ये वाला स्पेसिफिकली चूज किया इस वीडियो के लिए बिकॉज ये टाइमलेस आइकॉनिक पीस है। ये 30 साल पहले लॉन्च हुआ था। दिस वाज लॉन्च इन 1994। नाउ दिस फ्रेग्रेंस इन पर्टिकुलर हैज अ टन ऑफ नोट्स एंड वन ऑफ देम इज यूजू, व्हिच आई स्पेशली लव. It is not found in a lot of other fragrances. It is very unique and it smells so fresh, so bright and so elegant. On top you will find yuzu lemon, bergamot lemon, verbena, mandarin orange, cypress, cologne, coriander, sage and tarragon. Middle notes are blue lotus, nutmeg, lily of the valley, bourbon geranium, saffron, Ceylon cinnamon, and mignonette. Base notes are Tahitian, vetiver, musk, cedar, sandalwood, amber, and tobacco. And with that, ladies and gentlemen, I have aged a bit more. But I think it is this long list of notes that make this fragrance so iconic, so unique. Because it's a very citrus heavy, it has a lot of lemon notes, an extreme freshy. Don't expect it to last beyond 6 hours. 6 hours is the maximum that you should get out of it. But believe me, the moment you spray it on, you will feel just so refreshed, just so vibrant. Now this one will cost you about 32 to 3500 bucks depending कि आप कहाँ से खरीद रहे हो. But if you're someone who's just started building his perfume collection, I think ये आपकी perfume collection में definitely होना चाहिए. Now the next one on this list is Missoni Wave. Before I talk about how this smells, what kind of notes it has, I want to show you something. This is also one of my favorites, by the way. It has a beautiful atomizer. Now this has a lot of C notes. So इसको लगाते ही आप immediately एक बहुत ही beachy location पे, you'll get transported to a very beachy location. Missoni Wave is a cross between Chanel's Allure Homme Sport and Versace's Pour Homme. And the reason why I've included Missoni Wave in this list is because it's versatile, it's mass appealing, so a lot of you will definitely like it. Let's quickly look at the notes. In the top, it has C notes, citruses, and Sicilian mandarin. Middle notes are lavender, clary sage, rosemary, and Egyptian pelargonium. In the base, you will find vanilla orchid, Haitian vetiver, patchouli, and oak moss. Now, this one is slightly more sweeter, a bit more creamier compared to other perfumes that we've discussed in this price bracket. So, I think this is also well suited for evenings. Now, longevity wise, ये 6 से 6.5 7 घंटे के आसपास लास्ट करेगा. So, when you're applying this, please spray the heck out of it. Now, for a 100 ml bottle, ये आपको 5000 रुपए कॉस्ट करेगा. And now we've come down to the last perfume in this price bracket and also in this list. This one is Explorer by Montblanc. Montblanc एक designer house है, so definitely ये designer fragrance है. इसकी bottle, इसकी packaging काफी classy, काफी expensive looking है. The leather, this gradient on this bottle makes it look very, very premium. The Explorer has citrus notes mixed with wood, oud, amber, and musk. If you look at Fragrantica and check out Explorer, it is rated 4.2 with almost 14,000 people voting on this one. इसके top notes में है bergamot, pink pepper and clary sage. Middle notes में Haitian vetiver and leather. Base notes में है ambroxan, akigala wood, Indonesian patchouli leaf and cacao pod. Now this is a very masculine summer fragrance and a lot of people say this is inspired by Creed Aventus, but according to me it's a masterpiece in itself. Well, मैंने Explorer originally तब खरीदा था जब मैं एक perfume collector भी नहीं था. मैंने अपने पर्सनल यूज के लिया था, बट दिस वन इज माई सेकेंड बॉटल. आई लव इट सो मच. यू कैन यूज इट इन मॉर्निंग, इवनिंग, almost all seasons, in office, at parties, school, college, totally depends on you. For a 100 ml bottle, you'll have to shell out 4,800 bucks for it. With this, we've come to the end of this video, and this concludes my list of top recommendations for perfumes for summer and monsoon season under 5,000. Like I said earlier, I made this list after a lot of deliberation, after a lot of research. But if you think I've missed out on some important perfumes that should be part of this list, please let me know in the comments below. Also,
If you think that I should do another list of perfumes beyond 5,000 or 5,000 and above, please do let me know and I'll work on that as well. Coming to the giveaway and the rules of engagement on it. The rules are simple. You have to like this video, subscribe to the channel on YouTube, and follow my Instagram page as well. I will leave the link below in the description box. Third is that you have to comment below which is your favorite fragrance from this lineup and tell me why you love it. Now remember, all 3 steps are important for you to participate in this giveaway. Again, I want to clarify, there'll be one winner chosen at random who will win both of these perfumes. The winner will be announced in my next YouTube video, and I will also be announcing the winner on the same day on my Instagram account as well. So make sure you're following both the pages, and make sure that you hit the bell icon so that you are notified as soon as the next video is out. That's all from me, folks. Let the comments flow, and I'll see you in the next video. Till then, smell amazing.